अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट पॉलिनेशन। Pollination is the first step towards fertilization, towards sexual reproduction. Pollination was first discovered by Camrarius, and the pollination it takes place only in angiosperm and gymnosperm. In angiosperm, pollination is indirect, whereas in gymnosperm, pollination is direct. What it means? What is the meaning of direct pollination and indirect pollination? In case of gymnosperm, ovaries are absent, so directly the pollen grains reaches up to the ovules. There is a direct fusion of male gamete with a female gamete. There is no intermediate organ, or there is no intermediate organ who interacted with the pollen grains. So in case of gymnosperm, pollen grain directly fuses with the ovule, और ऐसे फ्यूजन को हम कहते हैं डायरेक्ट पॉलिनेशन. इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, पोलन ग्रेन फर्स्ट इंटरैक्टेड विद द स्टिग्मा. आफ्टर स्टिग्मा इट रीचेस अप टू द ओव्यूल. हियर स्टिग्मा इज अ इंटरमीडिएट ऑर्गन वेयर द पोलन ग्रेन फर्स्ट हैज टू फ्यूज. After that, it reaches up to the ovule. So here, in case of angiosperm, pollination is indirect. Pollination is indirect. So what is pollination? Pollination is defined as it is transformation of pollen grain from anther to stigma. Transformation of pollen grain from anther to stigma is called as a pollination. Pollination is defined as it is a transformation of pollen grain from anther to stigma is called as a pollination. अब ये पोलन ग्रेन किस एंथर से किस स्टिग्मा तक फ्यूज होता है, उसके बेसिस पर pollination are of two types. This pollination is of two types: self pollination and cross pollination. These are the two types of pollination. Let's first talk about self pollination. Transformation of pollen grain from anther to stigma of same flower or the other flower present on the same plant. What is self pollination? Self pollination is defined as the transformation of pollen grain from anther to stigma of same flower or the two flowers present on the same plant. This type of transformation is called as a self pollination. ऐसा पॉलिनेशन जिसमें पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक जाते हैं और वो स्टिग्मा और एंथर एक ही फ्लावर के बीच में होते हैं, और आइदर द टू फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. एक ही प्लांट पर प्रेजेंट टू फ्लावर्स, उनके बीच में अगर पॉलिनेशन होता है या फिर एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है, दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज अ सेल्फ पॉलिनेशन. इस पॉलिनेशन को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. हियर दैट सेल्फ पॉलिनेशन अगेन आर ऑफ टू टाइप्स, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन बता रहे हैं कि या तो पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में होगा या फिर पॉलिनेशन एक प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस self pollination further classified into two types. That first type is autogamy. The first type of self pollination is autogamy. Autogamy it derived from two words, auto and gamy. Auto means self, gamy marriage. Autogamy it is a type of self pollination where pollination occurs within the flower itself. Pollen grains are fuses in the same flower of stigma. एक ही फ्लावर में अगर pollination होता है, then that pollination is called as a autogamy. Transformation of pollen grain from anther to stigma of a same flower. Transformation of pollen grain from anther to stigma of a same flower. This type of pollination is called as a autogamy. In this type, flowers, they may be
bisexual and homogeneous flower. These flowers, the type of pollination occurs in the flowers who are bisexual or hermaphrodite, having both the reproductive organ, that is androecium and gynoecium, both present in a single flower, and they get mature at the same time. Both the gametes, they get mature at the same time. That condition is called as a homogeneous. So autogamy, it occurs in the flowers who are bisexual or hermaphrodite, and the gametes, they get mature at the same time, and this condition is called as a homogamous flower. For example, this type of autogamy or this type of pollination is more common. बहुत सारे examples आपको इससे related मिलेंगे. For example, Mirabilis, Jalpa, potato, tomato, rice, tobaccos are the examples of autogamy, where pollination occurs in a same flower. Next type of self-pollination is diatonogamy. The first one is a autogamy. The second one is diatonogamy. Again, it is made up of two words. Diatono, neighbor. Gamy, marriage. Diatonogamy, it is the another type of self-pollination where pollination occurs between two flowers present on the same plant. Diatonogamy, it is a type of pollination occurs between the two flowers present on the same plant. एक प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है, then that pollination is called as a diatonogamy. Pollination occurs between the two flowers present on the same plant. Transformation of pollen grain from anther of one flower towards the stigma of another flower present on the same plant. Transformation of pollen grain from anther of one flower towards the stigma of another flower present on the same plant. या फिर simply आप कह सकते हो transformation of pollen grain between two flowers present on the same plant. Pollination occurs between two flowers present on the same plant is called as a diatonogamy. This type of pollination occurs in the flowers who are either unisexual or bisexual. This type of pollination occurs between the flowers. Either these flowers are unisexual, either it may be pistillate flower or either it may be staminate flower. या तो वो मेल फ्लावर होगा सिंपली और फीमेल फ्लावर होगा, और either they are bisexual or hermaphrodite. But the plants are monoecious. Flowers unisexual or bisexual हो सकते हैं, but the plant must be monoecious. What is monoecious plant? A plant who contain male and female both the flowers. ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों भी प्रेजेंट होते हैं, that plants are called as a monoecious plant. So here the plant must be monoecious because pollination occurs between the two flowers present on the same plant. The plant must contain male and female both the flowers. So here plants are monoecious. And अगर आप इसको देखोगे गिटिनोगैमी, ecologically it is a type of cross pollination. As it required external agent for transformation of pollen grain. क्योंकि पोलन ग्रेन एक ही फ्लावर के बीच में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, and just to transfer this pollen grain, as the pollen grains are non-motile, unable to reach themselves up to the stigma, they required any agency, they required any agent. So because of this reason, ecologically this diatonogamy is a type of cross pollination, but genetically it is a type of self pollination because pollination occurs in a same plant. That's why genetically they are similar to that plant only.
तो इकोलॉजिकली अगर आप देखते हो तो ये एक क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है। whereas जेनेटिकली अगर आप देखते हो तो ये एक सेल्फ पॉलिनेशन है, बिकॉज ये पॉलिनेशन एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में होता है। they receive the same character, they receive same genes, so they are genetically identical to their parents. So these are the two types of सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी एंड गैटेनोगैमी। और गैटेनोगैमी के एग्जांपल्स इफ यू ऑब्जर्व, मेज, जवार, मोस्टली मोनोकॉट्स जो होते हैं दे पॉलिनेट बाय मींस ऑफ गैटेनोगैमी। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। वो क्या है इसको हम देखेंगे। फर्स्ट वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस। पहले हम देखेंगे अबाउट एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एडवांटेजेस, इट इज अ श्योर मेथड। इट इज अ श्योर मेथड बिकॉज pollination or the transformation of pollen grain occurs in the same flower or in a same plant। एक ही प्लांट में हो रहा है या एक ही फ्लावर में हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे इट इज वन ऑफ द श्योर मेथड ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होगा ही होगा। It is a sure method. There is no need to produce large number of pollen grains because there is no wastage of pollen grain. अगर पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरे जगह, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाना होता है, तो there must be wastage of pollen grain. But here pollination takes place either in a same flower or two flower present on the same plant. So there is no wastage of pollen grain. तो ये क्या करते हैं, there is no need to produce large number of pollen grains. There is no wastage of pollen grains. There is no required of external agents. External agencies are not required. Less energy is required. Less energy because there is no required of attractive. There is no required to produce attraction in themselves. Flowers are not attractive. यहाँ पर flowers are generally colorless, nectarless, fragrantless. So there is no need to attract external agents, and just for their attraction they use their energy. तो यहाँ पर उनकी एनर्जी ना एक्स्ट्रा पोलन ग्रेन्स बनाने में लग रही है, ना ही फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाने में लग रही है। सो इट इज मोर इकोनॉमिकल मेथड। ये एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। देयर इज अ लेस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, देयर इज अ लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। जेनेटिकली प्योर वैरायटीज आर ऑब्टेन। जेनेटिकली प्योर वैरायटीज आर ऑब्टेन दैट दे मेंटेन प्योर लाइन। जेनेटिकली स्टेबिलिटी इज मेंटेन, pure line is maintained, genetically pure varieties are obtained. So these are the advantages of self pollination. Now disadvantages, जहाँ पर इतने advantages होते हैं, there are certain disadvantages of self pollination. What are the disadvantages? Disadvantages of self pollination. Through this pollination, we cannot introduce desirable character and we cannot eliminate undesirable character. If in a plant some undesirable characters are present, we cannot eliminate that unrequired undesirable character through this method. इस मेथड के थ्रू हम अनडिजायरेबल कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर जो हमें नहीं चाहिए या फिर ऐसा कैरेक्टर जो वीक है, उस कैरेक्टर को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते और ना ही हम डिजायरेबल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन वी कैन नॉट एलिमिनेट अनडिजायरेबल कैरेक्टर और नॉर इंट्रोड्यूस द डिजायरेबल कैरेक्टर। The progeny becomes weaker and weaker because of continuous self pollination. जो जनरेशन होता है, जो प्रोजेनी होती है, वो वीक होती जाती है as continuously self pollination occurs. Crop production decreases. Due to this, crop production decreases. It do not produce variations because pollination occurs in a same flower or in a same plant. That's why there is no varieties are obtained.
They do not produce variation. As they do not produce variation, there is no role in evolution. They do not help in evolution. नए स्पेसीज को बनाने में, नए वैरायटी को बनाने में इसका कोई भी रोल नहीं होता है. So they do not help in evolution. There is less viability of seed. Seed becomes less viable, less able to germinate. There is a resulting in the less viability of seed, and the percentage of seed germination is low. The percentage अब viable नहीं होगा. Viable seed, ऐसा seed जो germinate होता है, that character of seed is called as a viability. So the viability of seed is less, so germination of seed is also less. Results in the less viability of seed, and percentage of seed germination is also low. These are the disadvantages of self pollination. पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. पहला हमने देखा सेल्फ पॉलिनेशन, अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज क्रॉस पॉलिनेशन. What is cross pollination? Pollination occurs between two flowers present on two different plants, either of same species or a different species. Here the pollen grains are transferred from one flower to another flower present on the two different plants. That two different plants are either of same species or of other species. This type of pollination is called cross pollination. What is cross pollination? Pollination occurs between two flowers present on two different plants, either of same species or different species. दो flowers है दो different plant पर, आइदर वो प्लांट एक स्पेसीज के है या अलग अलग स्पेसीज के है. अगर ऐसा पॉलिनेशन होता है, दिस पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज अ क्रॉस पॉलिनेशन. पॉलिनेशन ऑकर्स बिटवीन टू फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट, आइदर ऑफ सेम स्पेसीज और डिफरेंट स्पेसीज. यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो एक स्पेसीज के है या तो डिफरेंट स्पेसीज के है. तो यहाँ पर फिर से इनके क्लासिफिकेशन होते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, xenogamy and hybridization. Xenogamy and hybridization. Here the flowers, in case of cross pollination, flowers may be unisexual or bisexual. In case of cross pollination, flowers may be unisexual or bisexual, but the plants must be dioecious. The plants must be dioecious. That male flower and female flower both are present on two different plants. Dioecious male flower and female flower, they both present on two different plants. एक प्लांट पर सिर्फ एक ही यानी कि फीमेल फ्लावर ही होंगे, दूसरे प्लांट पर सिर्फ मेल ही फ्लावर होंगे, वाइस वर्सा. यानी दो फ्लावर्स जो होते हैं, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट, दिस प्लांट्स आर कॉल्ड एज अ dioecious plant. This kind of plants are called as a dioecious plant. यहाँ पर हमने देखा मोनोशियस, यानी कि एक प्लांट पर दोनों भी फ्लावर प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, उसको हम कहते हैं मोनोशियस. और डायोशियस मेल और फीमेल फ्लावर, ये दो अलग अलग प्लांट्स पर प्रेजेंट होते हैं. तो हियर द कंडीशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन दैट द प्लांट्स आर ऑलवेज डायोशियस. अब देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज xenogamy. Xenogamy. Cross pollination is also called as allogamy. It is also called as allogamy. Allogamy. So the first type of cross pollination or allogamy is xenogamy. The transformation of pollen grain from anther to stigma of two flower present on two different plants of same species. Transformation of pollen grain from anther to stigma of two different flower
present on two different plants of same species. Simply, pollination occurs between two flowers present on two different plants of same species. एक ही स्पेसीज के दो प्लांट के फ्लावर्स में जब पॉलिनेशन होता है उस पॉलिनेशन को हम कहते हैं ज़ेनोगैमी. This type of pollination is called as a xenogamy. This xenogamy is also called as a intraspecific pollination. Intraspecific, that same species. Pollination occurs between same species, two plants of same species. Intraspecific pollination. For example, papaya, China rose, sunflowers, etc. Xenogamy, a pollination occurs between two flowers present on two plants of a same species. एक ही स्पेसीज के दो प्लांट के बीच में, दो फ्लावर्स के बीच में जो पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं xenogamy, and it is intraspecific, same species. Intraspecific means same species. Next, the next type of cross pollination is hybridization. Pollination occurs between two flowers present on two different plants of two different species. Transformation of pollen grain from anther to stigma of two different flowers present on two different plants of two different species. दो स्पेसीज के जो प्लांट होते हैं उनके फ्लावर्स में जब पॉलिनेशन होता है, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिडाइजेशन. Pollination occurs between two flowers present on two plants of two different species. दो अलग अलग स्पेसीज के प्लांट्स के फ्लावर्स में जब पॉलिनेशन होता है, that pollination is called as a hybridization. And this hybridization is also called as a interspecific. This means two different species. Pollination occurs between two different species of flowers. This condition is called as a interspecific or intergeneric between two different genera, two different generic pollination. For example, between the two species of cotton, two pollination occurs between two different species of cotton. So these are the two types of cross pollination. First is xenogamy and the second is hybridization. Xenogamy, pollination occurs between two plants of same species, and hybridization occurs between the two flowers of two different species. दो अलग अलग species के जो flowers होते हैं उनके बीच में अगर pollination होगा, उस pollination को we can say hybridization or interspecific or intergeneric pollination. Now the next point is the advantages and disadvantages of cross pollination. First we talk about advantages. Desirable characters may introduce, undesirable characters can be eliminated through cross pollination. क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग species involve हो सकते हैं, तो you can choose a specific character which you can to introduce into the progeny. So undesirable character can be removed and desirable characters can be introduced. आपको जो character चाहिए आप उसको introduce कर सकते हैं, और you can, if you want to eliminate some character, it can be eliminated. Progeny becomes stronger and healthier. Progeny becomes stronger and healthier. Crop production increases. The crop production increases. Helps in evolution because it produces a number of variations. That's why it plays a very important role in case of evolution. It helps in evolution. Improved varieties can be produced. आप हाइब्रिड प्रोसेस के थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आप सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्लांट यू मे चूज फॉर पॉलिनेशन. सो द इम्प्रूव्ड वैरायटीज
of plant can be produced. A disease resistance plant can be produced. अब improved variety है तो आप कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर ले सकते हो, high vigor, disease resistant, climatic resistant, any of superior quality you can introduce into the progeny. So disease resistant varieties can be obtained. Now disadvantages. What are the disadvantages of cross pollination? It is not a sure method. It is not a sure method because the transformation of pollen grain, it takes place between the two plants. So there is a chance. It is not a sure method. There is a vestige of pollen grain. जरूरी नहीं है कि जो पोलन ग्रेन है वो एग्जैक्टली एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में चला जाए, एग्जैक्टली सेम फ्लावर में या फिर दो अलग अलग फ्लावर्स में वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ श्योर मेथड एंड देयर इज अ मोर वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन. देयर इज अ मोर वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन. इट डिपेंड्स ऑन sorry, it depends on the external agencies or external agents. As the transformation of pollen grain, it takes place between the two plants. That's why they need agents. External agencies are required. More energies are required to produce bright colored fragrance and nectars. They required agents, external agent, and just to attract that agents, the flower must be attractive. So just to make the flower attractive, they becomes colorful, bright color, fragrance and nectars are produced. Just to produce all these characteristics, energy is required. So it is energy consuming process. Here there is a more energy is required. Genetically pure varieties cannot be obtained. Pure line cannot be maintained. Genetically pure varieties cannot be obtained as the two different plants are involved, so genetically they may not be similar. Undesirable varieties may be introduced. Undesirable varieties they may be introduced, and the desirable varieties or the desirable characters they may eliminate through this process. It is a wasteful method as more energy and more pollen grains are required. It is one of the wasteful method that it required more energy to become a flower more attractive, and they produce more number of pollen grain just to compensate the wastage of pollen grain. They produce more pollen grain. They require more energy to produce more pollen grain. For example, cannabis, they produces 5 lakhs of pollen grain at a single time. All these 5 lakhs of pollen grain, they cannot be pollinated. So there is a more wastage of pollen grain. So these are the two types of pollination, self-pollination and cross-pollination, who further classified into two types, autogamy and geitonogamy, xenogamy and hybridization. These are the टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जिसको हमने देखा, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ. अब इसके बाद हम देखेंगे दैट द क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एजेंट्स और एक्सटर्नल एजेंसीज आर रिक्वायर्ड. व्हाट आर दीज एजेंट्स एंड व्हाट इज देयर रोल? ओके, तो अब देखेंगे हम अबाउट पॉलिनेटिंग एजेंट. As the pollen grains are non-motile, they are unable to reach stigma by themselves. So they required pollinating agencies or they required agents. These agencies or the agents are either biotic agent or abiotic agent. Pollinating agents, the agents who are transferring the pollen grains, or these are the vectors who are transferring the pollen grain from anther to stigma. These pollinating agents, they are classified into two types, living and non-living, or they are also called as a biotic and abiotic. Abiotic agent, the abiotic agents are the physical factor of the environment. Abiotic agents are the physical factor of the environment, or they are air and water. Abiotic agents are
air and water. Whereas the biotic agent, the living organism who are responsible to transfer the pollen grain from anther to stigma, who acted as a vector, who are the agent. These are a biotic agent, and because the living organisms are involved, these biotic agents are also called as a zoophily. They are also called as a zoophily. So let's talk about biotic and abiotic agents. तो पहला हम देखेंगे about the physical factor of environment, those who are acted as a vector to transfer the pollen grain from anther to stigma. These factors are wind and water. First of all, pollination through wind. Pollination through wind is called as a anemophily. Pollination through wind is called as a anemophily. Simply wind pollination. बट इसके लिए टर्मिनोलॉजीज दिए गए हैं एंड हमको टर्मिनोलॉजी ही याद रखना है. अनीमोफिली डिराइव फ्रॉम द वर्ड अनीमोन. अनीमोन wind. It is a wind pollination. Transformation of pollen grain from anther to stigma by means of air, by means of wind is called as a anemophily. It is the most primitive type of pollination. It is the most primitive type of pollination. The plants who get pollinated by wind, these plants are called as a anemophilous plant. And the flowers who get pollinated by air, that flowers are called as a anemophilous flower. Just to favor pollination through wind, flowers shows some adaptations, and these adaptations are called as a anemophilous adaptations. क्या बता रहे हैं कि ऐसे plants जो wind से pollinate होते हैं, these plants are called as a anemophilous plant, and the flowers anemophilous flower. तो wind से pollinate होने के लिए flowers अपने अंदर कुछ changes लेकर आते हैं, कुछ characters को वो adapt करते हैं, and these adaptations are called as a floral adaptations, and these adaptations are to favor wind pollination, that is anemophily. So here we discuss about the anemophilous floral adaptations. यानी अनीमोफिली करने के लिए फ्लावर अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आते हैं या फिर फ्लावर्स के कैरेक्टर्स कैसे होते हैं. तो पहला हम देखेंगे अबाउट फ्लावर्स. द फ्लावर्स हु गेट पॉलिनेटेड बाय विंड. These flowers are small, inconspicuous, colorless, nectarless, feathery, scaly, or the petals are generally green or non in color. The flowers of anemophilous plants, they are small, inconspicuous, unnoticeable or unattractive. ये कलरलेस होते हैं, इनकंस्पिशियस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं, फ्रैग्रेंटलेस होते हैं. ओवरऑल दे आर नॉट अट्रैक्टिव एट ऑल. दे आर नॉट अट्रैक्टिव एट ऑल बिकॉज यहाँ पर आप देखते हो देयर इज नो नीड टू अट्रैक्ट विंड. ड्यू टू दिस द फ्लावर्स दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर एनर्जी टू बिकम अट्रैक्टिव. सो हियर द फ्लावर्स आर कलरलेस, nectarless, fragrantless, feathery, scaly sometimes, or a feathery like structure is present. Petals are green in color. और ये जो flowers होते हैं small होते हैं, unnoticeable होते हैं. Then these flowers they produces above the foliage. The flowers generally produces above the foliage. The stamens. अब इनके stamen कैसे होते हैं? Stamens are long filament and versatile anther. Stamens, they having a long filament. Their filament is long. And they having a versatile anther. Anther, versatile means what? The filament is attached to anther only at one point, that the anther can swing in any direction wherever the direction of the wind is there.
स्टेमेन अगर हम देखते हैं, इन फ्लावर के जो स्टेमेन हम देखते हैं, तो स्टेमेन में फिलामेंट जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और एंथर इज वर्सटाइल। वर्सटाइल एंथर हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, वर्सटाइल एंथर किसे कहते हैं। ऐसा एंथर जिसका अटैचमेंट फिलामेंट से सिर्फ एक ही पॉइंट पर होता है, that anther is called as a versatile anther। और ये इस वजह से होता है कि wherever the wind direction is there, तो ये easily उस डायरेक्शन में स्विंग कर सके और वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर सके, पोलन ग्रेन को उसमें डस्ट कर सके। तो here the stamens are long and filament is long, anther is versatile। If the plant is monoecious, male and female, both the flowers present on the same plant. Male flowers always occupy higher position, that it is always present at the apical region. Male or female flower, if it is present on the same plant, that time the male flower is always present at the apex, whereas the female flower is present towards the lower nodal region। जो मेल फ्लावर होंगे, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द अबोव, एट द अपेक्स, एट द टर्मिनल एंड, whereas the female flowers they are situated towards the basal side, towards the lower nodal region। तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर्स हमेशा ऊपर रहेंगे, फीमेल फ्लावर्स हमेशा नीचे रहेंगे। ये जो मेल फ्लावर होते हैं, इनके जो स्टेमेन होंगे, ये स्टेमेन हमेशा लॉन्ग फिलामेंटेड रहेंगे और इनका एंथर वर्सेटाइल होगा। अब जब स्टेमेन हम देखें, अब देखेंगे हम इनके कार्पेल्स कैसे होते हैं, स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल कैसा होता है। हियर द स्टिग्मा इज हेयरी और फीदरी। स्टिग्मा इज हेयरी एंड फीदरी। In normal condition, in anemophilous flowers, stigma is hairy and feathery to catch wind-borne pollen grains. To catch wind-borne pollen grains. The style is long. Its style is long, and the stigma and anther both are in exerted condition. They comes above the petals. They comes above the corolla. These stigma and anthers, they are above the petals. Their condition is called as a exerted condition. Their pollen grains are small, pale or yellow in color, lightweight, smooth walled, dusty, may have wings or air sacs. Their pollen grains, how the pollen grains are there? The pollen grains are small, pale, light in weight, smooth walled, dusty, may have wings or air sac for easy swing or easy transformation. Through anemophily, it is a primitive type of pollination, and the flowers are colorless or non-attractive. So where they utilize their energy to produce more number of pollen grain, just to compensate the wastage of pollen grain. अनीमोफिली के जो फ्लावर्स होते हैं वो नॉन अट्रैक्टिव होते हैं। वो अपनी एनर्जी फ्लावर को अट्रैक्ट करने में नहीं लगाते, क्योंकि विंड को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो वो अपनी एनर्जी कहाँ यूज करते हैं? दे यूज देयर एनर्जी इन द प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन जस्ट टू कंपनसेट द वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। क्योंकि यहाँ पर विंड पॉलिनेशन जो होता है, इट इज नॉट अ श्योर मेथड। विंड का जो डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन में अगर कंपैटिबल अगर फ्लावर होते हैं, स्टिग्मा अगर रिसेप्टिव होते हैं, ओनली दैट टाइम द पोलन ग्रेन्स कैन बी फ्यूज और वहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं, पॉलिनेशन वहां पर सक्सेसफुल होता है। बट ये जो मेथड है अनीमोफिली के थ्रू, इट इज नॉट अ श्योर मेथड। देयर इज अ चांस और देयर मस्ट बी मोर वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। अब क्योंकि पोलन ग्रेन का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, तो जस्ट टू एंश्योर द pollination, these flowers produces more number of pollen grain just to compensate the wastage। तो अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, फॉर एग्जाम्पल कैनाबीस, भांग,
That species produces around 5 lakhs of pollen grain. Cannabis produces 5 lakhs of pollen grain. अब इतने जो pollen grains बनते हैं, out of 5 lakhs, only few they may reach up to the compatible stigma, or only few get pollinated. The another example that a single tassel of maize, a single bunch of maize जो उसका inflorescence होता है, a single tassel of maize, it produces around 20 to 25 million of pollen grains. These are the huge numbers of pollen grains. And why they are producing huge number of pollen grain? Just to ensure the pollination and just to compensate the wastage of pollination. तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल इनके जो होंगे वो यहाँ पर हमने स्केच किया. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ jawar, where the male flowers are present at the apex and the female flowers are present towards the lower nodal region. The examples are sugarcane, bamboo, grasses, jawar, maize. These are the examples of anemophilous plant, a plant who get pollinate through air. Now, the next agency is water. The next agent is water. Pollination through water is called as a hydrophily. Pollination through water is called as a hydrophily. Hydrophily is rarely occurs. Aquatic plants rarely water से pollinate होते हैं. Mostly it get pollinated by insects. Hydrophily, pollination through water, is called as a hydrophily, and the plants who get pollinated by water, hydrophilous plant. The flowers who get pollinated by water, hydrophilous flowers. The flowers who get pollinated by water, they are called as a hydrophilous flowers. Just to favor pollination through water, flowers adapted some characters, and these characteristics, these adaptations are called as a floral adaptations of hydrophily. तो ये adaptations कैसे होते हैं? What are the characteristics of flowers? Those who get pollinated by water. Flowers are colorless, nectarless, fragrantless, and these flowers are non-attractive at all. Overall, these flowers, ये जो flowers होते हैं non-attractive होते हैं. Again, there is no need to attract water. यहाँ पर water को attract करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. इस वजह से जो flowers होते हैं, these flowers are colorless, fragrantless, nectarless, small, inconspicuous. These are the flowers. Generally, the flowers or the parts of flowers, the corolla, calyx or perianth, they are covered by mucilage. Hydrophilous flowers, the parts of flower, they are covered by mucilage, a coating just to make it unwettable, ताकि जो flower है वो unwettable हो, and just for this the flower is coated by mucilage. Now the next part of the flower, their stigma is long and sticky. इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो long and sticky, whereas pollens are without exine. Their stigma is long and sticky, and the pollens are without exine. Here, exine is absent, and both pollen grains or the anther and stigma, they both are covered by wax. The pollen grains and stigma both are covered by wax. Now, अब pollination water में हो रहा है, तो ये pollination water के surface पर होता है, or either it occurs below the water level. On the basis of this, the hydrophily further classified into two types. Hydrophily further classified into two types on the basis of where actually pollination occurs. Either it takes place over the surface of water, or either it takes place below the surface of water. On the basis of this, it is of two types. The first type is epihydrophily. The first type of hydrophily is epihydrophily, where epi is above
Here the pollination occurs above the surface of water. ऐसा pollination जो पानी के ऊपर लेयर पर होता है, उस pollination को हम कहते हैं epihydrophily. For example, Vallisneria. It is one of the dioecious plant. Vallisneria is one of the dioecious plant where male and female both the flowers present on the two different plants. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेल और फीमेल फ्लावर दो अलग अलग प्लांट्स पर प्रेजेंट होते हैं, तो इनके फ्लावर्स किस तरह हो रहे हैं, स्टेमिनेट फ्लावर कैसा है और पिस्टिलेट फ्लावर कैसा है, उसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द फीमेल फ्लावर, दैट इज अ पिस्टिलेट फ्लावर, इट हैव लॉन्ग कॉइल्ड पेडिसल. इनका जो पेडिसल होता है, फीमेल फ्लावर का जो पेडिसल होता है, इट इज लॉन्ग एंड कॉइल्ड. एज यू ऑब्जर्व हियर, अ कॉइल्ड, द स्टॉक इज कॉइल्ड. After attaining maturity, this pedicel, it becomes uncoiled or it comes above the surface of water, because this Vallisneria or whatever the plant is there, it is submerged in the water. And this female flower, that is a pistillate flower, they have long coiled pedicel. This pedicel, after attaining मैच्योरिटी, इट गेट्स अनकॉइल्ड. ये अनकॉइल्ड होते हैं जिसकी वजह से इनकी लेंथ इंक्रीज होती है और इट कम्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर. Whereas the male flowers, they are submerged but they detach from the parent body. The male flowers, they detach from the parent body and they floated over the surface of water. The male flowers, they detach and they floated over the surface of water. Wherever the stigma come closer towards the pollen grain के पास, जब स्टिग्मा आते हैं या pollen grains lie close to the stigma, the anther busted the pollen grains. क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो मेल फ्लावर्स है, they floated over the surface of water. Whenever the anther, they come closer to the stigma. The anther come closer to the stigma. These anther get anthesis and it burst out the pollen grain, and finally the stigma get fused with the pollen grain, and finally pollination occurs. कहाँ हो रहा है pollination? Over the surface of water. And the example of epihydrophily, Vallisneria. उसके बाद next हम देख रहे हैं next type of hydrophily, hypohydrophily. Hypo, below. Pollination occurs below the surface of water. Here the plant is totally submerged in the water. The plant is totally submerged in the water. For example, Zoastera. Zoastera is marine angiosperm. तो यहाँ पर आप देखते हो तो pollen grains, here the pollen grains are long elongated needle like. The shape of pollen grain is long elongated needle like, and these pollen, it coils around the stigma. Wherever the stigma is present, it coils around the stigma and it gets germinate. Why the pollens are not comes above the surface of water, or not, why it is not floated on the surface of water? Because the pollen has the same gravity that is of water. जितनी gravity water की होती है, same gravity पोलन ग्रेन की होती है. इसी वजह से ये पानी के ऊपर नहीं आते, ओवर द सरफेस से नहीं आते. और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनकी ग्रेविटी को कंट्रोल किया जाता है. इन केस ऑफ वेलिस्नेरिया जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ग्रेविटी को कंट्रोल करते हैं, एंड ड्यू टू दिस दे कम्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर. Whereas in case of hypohydrophily, in case of Zoastera, the gravity of pollen grain is same as in water, and due to this the pollen grain, it remain present below the surface of water, and whenever the pollen grain they come closer to the stigma, they coil the stigma and they get germinate. So in this way pollination occurs in water. Aquatic plants, the source of pollination must be water,
but they rarely pollinate by water. वो बहुत ही कम water से pollinate करते हैं. Aquatic plant they get pollinate mostly by insect. So here in our syllabus the two agents are present. That first is wind. Pollination through wind is called as anemophily, and the another is water. Pollination through water is called as a hydrophily, where actually in water pollination occurs on the basis of this. Again it divides hydrophily classified into two types, epihydrophily and hypohydrophily. Epi means above. Pollination occurs above the surface of water, whereas hypohydrophily, where hypo means below, here pollination occurs below the surface of water. So these are the two types of hydrophily. It is about abiotic agents. Pollinating agents, the environmental factors जो होते हैं वो दो हैं. पहला है wind और दूसरा है water. Now talk about zoophily, that pollination occurs through living organism. Pollination through living organisms are considered as a biotic agent, but इनको एक term दिया गया है, it is called as a zoophily. Number of living organisms they involved in transformation of pollen grain from anther to stigma, but the most common living organism who are responsible for pollination उसको हम डिस्कस करेंगे, उसी को हमारे सिलेबस में दिया गया है. तो आउट ऑफ द सो मेनी एजेंट सबसे पहला हम देखेंगे, द फर्स्ट टाइप इज एंटेमोफिली. द फर्स्ट type of pollination of zoophily is entomophily. It derived from the word entomon. Entomon means insect. Insect. Pollination through insect. Pollination through insect is called entomophily. Bees, wasps, beetles, butterflies are the insect. This is a more common insect. Out of these, 80% entomophily takes place through bees. इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है उस पॉलिनेशन को हम कहते हैं एंटेमोफिली. बीज, मथ्स, वास्प, बीटल्स, बटरफ्लाइज, ये वो इंसेक्ट है जिनकी वजह से पॉलिनेशन होता है. अब इनमें से 80% जो पॉलिनेशन होगा, 80% जो इंसेक्ट का पॉलिनेशन होता है इट इज थ्रू बीज. और आप पूरा टोटल पॉलिनेशन देखोगे, यानी कि बायोटिक और ओबायोटिक दोनों में से अगर आप देखोगे तो एंजियोस्पर्म में 80% पॉलिनेशन जो होगा वो इंसेक्ट के थ्रू होता है. मीन्स इन एंजियोस्पर्म 80% पॉलिनेशन ऑकर्स थ्रू एंटेमोफिली. मीन्स व्हाट? एंजियोस्पर्म्स आर मोस्टली और 80% entomophilous plants. Plants who get pollinated by insects. These plants are called as a entomophilous plant, and the flowers are called as a entomophilous flowers. And just to favor flowers adapted some characteristic. These adaptations are called as a floral adaptations of entomophily. इंसेक्ट से पॉलिनेट होने के लिए, उसको फेवर करने के लिए फ्लावर्स अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आते हैं जो उनके कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं. तो हम देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट्स. अब देयर इज अ नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट. यहाँ पर जरूरत होती है फ्लावर को टू अट्रैक्ट इंसेक्ट. अब इंसेक्ट कैसे अट्रैक्ट करेंगे? तो यहाँ पर फ्लावर्स आर कलरफुल, producing nectars, producing fragrance. They produces a sweet smell. यहाँ पर a pleasant smell is produced by the flowers. Flowers they are utilizing their energy. यहाँ पर flowers अपनी energy को use करते हैं to become more attractive, just to attract insect. अब why the insect get attracted towards flowers? Because they're producing nectars, they're producing edible pollen grain just for the drink purpose or just for the food purpose. The insect they migrated, they visited to
flowers and they get pollinated. तो यहाँ पर flowers जो होते हैं mostly attractive होते हैं if the flowers are small inconspicuous. If the flowers are small, they are always in a group. That means they are forming inflorescence. कैसे हो रहे हैं यहाँ पर फ्लावर्स? कैसे हैं यहाँ पर फ्लावर्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं, दे प्रोड्यूसिंग काइंड ऑफ प्लेजेंट स्मेल. जो वास्प होते हैं जनरली फ्लावर्स में रात में विजिट करते हैं, तो रात में कलर दिखाई नहीं देता, तो ऐसे कंडीशन में फ्लावर्स क्या करते हैं, दे इमिट अ काइंड ऑफ प्लेजेंट स्मेल, ताकि इंसेक्ट जो है वो स्मेल को रिकॉग्नाइज करते हुए उस फ्लावर तक पहुंच सके. सो हियर द फ्लावर्स आर कलरफुल, attractive, they're producing nectar, they're producing edible pollen grains, and they're producing pleasant or a sweet smell. These flowers, they're producing pollen grains. Generally, the pollen grains, the exine is rough or spiny. The pollen grain is rough or spiny, and these pollen grains sometimes have pollen kit. A yellow, oily, powdery structure is present over the pollen grain produced by tactum, and this is a pollen kit. एंटेमोफिलस फ्लावर में जो पोलन ग्रेन होते हैं उनका एक्साइन रफ और स्पाइनी होता है, जस्ट टू प्रोवाइड अ ग्रिप, ताकि वो इंसेक्ट के अंदर ग्रिप प्रोवाइड कर सके. एंड दे हैविंग अ पोलन किट. इन सम इंसेक्ट लाइक इन बीज, in the mouth part, the pollen basket is present where the pollen grains are collected. Some flowers, they show special modifications. Some flowers again they show some special modifications. अब कुछ फ्लावर्स क्या करते हैं, अलग अलग एजेंट के थ्रू, यानी कि इंसेक्ट्स जो अलग अलग होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए दे अडॉप्टिंग सम अदर मॉडिफिकेशंस. For example, in viola, one of the species of flower, in case of viola, the petals contain some labeling that they provide a direction. viola के जो species होते हैं उनके petals में एक kind का direction होता है, petals के ऊपर एक direction होता है, and that direction is toward the nectaris, and finally where the wasp और जो insects होते हैं nectars तक जब पहुँचते हैं तो get pollinate. Whereas in case of other species, that flowers produces, for example, wasp, orchid. एक एग्जाम्पल हम फ्लावर का देखेंगे, ऑर्चिड. ऑर्चिड इज वन ऑफ द फ्लावर जिनमें फ्लावर का या फिर जो पेटल का शेप होता है, द शेप इज लाइक अ फीमेल वास्प. That the male wasp visited towards the flower as mistakenly considered as a female wasp. Just to copulate that female wasp, the male wasp visited to that flower and get pollinate. यानी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ऑर्चिड में जो पेटल्स होते हैं उनका शेप फीमेल वास्प के जैसा होता है. अब फीमेल वास्प के जैसा होता है यानी जो मेल वास्प होते हैं वो मिस्टेकनली, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि वहां पर फीमेल वास्प है और वो कपुलेट करने के लिए विजिट करते हैं और फाइनली वो पॉलिनेट करते हैं. अनदर एग्जांपल इन साल्विया. साल्विया में अगर आप देखोगे तो लीवर मैकेनिज्म is common. अब लीवर मैकेनिज्म in salvia is what? Here the two stamens are present. The anther is bilobed but bifurcated. तो अब यहाँ पर देखोगे तो जो स्टेमेन होते हैं, जो एंथर होते हैं, वो बाइफर्गेटेड एंथर होता है. अब बाइफर्गेटेड एंथर, अब जैसे ही इंसेक्ट इस फ्लावर के अंदर जाते हैं, यहाँ से जब अंदर जाते हैं तो असिमेट्रिकली अनइक्वल एंथर्स आर प्रेजेंट. The upper lobe of anther is fertile, whereas the lower lobe of anther is sterile. साल्विया के केस में एक लीवर मैकेनिज्म होता है. अब लीवर मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, जो एंथर है वो बाइफर्गेटेड है, बाइलोब्ड एंथर है, बाइफर्गेटेड है, यानी कि उनका जो कनेक्टिव है लूज अरेंज है, एंड जिसकी वजह से दो जो लोब्ड होते हैं हमको विजिबली दिखाई देते हैं. अब जैसे ही इंसेक्ट इस फ्लावर के अंदर रीच करता है तो जो दो लोब है आउट ऑफ द टू, द अपर लोब इज फर्टाइल
sterile and the lower lobe is sterile. Whenever the insect enters inside the stamen, that the lower lobe, ये जो lower lobe होता है वो थोड़ा सा पीछे जाता है और जो अपर लोब होता है it comes above over the surface of insect and it dusted the pollen grain on the surface of insect. वो क्या करते हैं, अपने पोलन ग्रेन को इंसेक्ट के बॉडी सरफेस पर डस्ट करते हैं और when these insect they migrate, they visited to another flower, the stigma becomes receptive and then pick that pollen grain from the surface of that insect. So this mechanism is called as a lever mechanism. ट्यूब पाइप mechanism भी इसको बोलते हैं, पाइप mechanism भी इसको बोलते हैं. तो यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा साल्विया का, और भी ऐसे स्पेशल मॉडिफिकेशंस होते हैं फ्लावर्स में जस्ट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर अ पॉलिनेशन. तो ऐसे फ्लावर्स जो कलरफुल होते हैं और फ्रैग्रेंस के साथ होते हैं, all these flowers they get pollinated by insect. They get pollinated by insect. और जो ऑलमोस्ट या फिर 80% जो पॉलिनेशन होता है एंजियोस्पर्म में वो इंसेक्ट के थ्रू ही होता है. दैट मीन्स 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर एंटेमोफिलस प्लांट्स. फिर भी कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, डिस्कस करें, लिस्ट करें, बनाना, जैस्मीन, रोज, बोगनविलिया एक्सेट्रा. फिर भी आप समझ सकते हैं कि ऐसे फ्लावर्स जो कलरफुल होते हैं, फ्रैग्रेंस होते हैं, these flowers are entomophilous flower who get pollinated by insect. Now the next type, ornithophily. Pollination through birds. Pollination through birds is called as a ornithophily. ऐसा pollination जिसमें pollen grains get transferred through birds. Pollen grains are transferred through birds. That pollination is called as a ornithophily. Ornitho, birds. Ornithophily, pollination through birds. Here the birds are smaller birds, mostly sunbird or hummingbird. The average size must be 4 centimeter. ऐसे birds जिनका साइज छोटा होता है, beak long होती है जनरली, तो hummingbird and the sunbird are most common bird who are acted as a vector, who are acted as an agent to transfer the pollen grain from one to the another flower. But another birds are also noticed in the some pollinating flowers. These are crow, बुलबुल और कुछ और दूसरे बर्ड्स भी हैं जो पॉलिनेशन रेयरली करते हैं. मोस्ट कॉमन सनबर्ड एंड हमिंगबर्ड हु हैविंग अ larger beak, smaller size of average 4 centimeter. अब यहाँ पर फ्लावर्स कैसे होते हैं, प्लांट्स कैसा होता है, तो ऐसे प्लांट्स जो बर्ड से पॉलिनेट होते हैं, that plants are called as a ornithophilous plants. A plant who get pollinated by birds, they are called as a ornithophilous plant, and the flowers are called as a ornithophilous flowers, and they shows some adaptation to favor pollination through birds, and these pollinations are called as a floral adaptations. The modifications are called as a floral adaptations of ornithophily. अब यहाँ पर कैसे फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर्स आर ब्राइट कलर, ऑरेंज, येलो, purple, blue color. The petals are brightly colored. They are having a large petals. Their petals are large, tubular or funnel shaped. They are having a large or healthy or leathery petals are present, and these petals are brightly colored. Bright color, orange, blue, purple, yellow, ये color के flowers होते हैं, and these flowers they does not emit any kind of smell or fragrance, as the birds have poor sense of smell. Birds have poor sense of smell. That's why the flowers are bright colored, but they are fragrantless. They are bright colored but fragrantless. These parts, the floral parts, the accessory and essential parts, they are well developed. They are strong and leathery. Tubular or funnel shaped corolla is present. They produces liquidy or fluidy nectar.
that the birds can visit for a drink purpose. ये शुगरी नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, फ्लूइड कंडीशन में नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं ताकि बर्ड्स जो है वो ड्रिंक पर्पस के लिए आए और उनके पोलन जो है वो पिक करे, ट्रांसफर करे, पॉलिनेशन करे। तो ये जो आप पॉलिनेशन देखते हो बर्ड्स के थ्रू, उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। और एग्जाम्पल्स आप इसके देखोगे तो किसमें बर्ड से पॉलिनेशन होता है, बॉम्बैक्स, अगेव, बेगोनिया are the common examples of ornithophilous plants. Pollination through birds is called as a ornithophily. और एक pollination है हमारे सिलेबस में, that is chiropterophily. Chiropteron is bat. Night blooming flowers, nocturnal flowers, flowers open at night. That flowers get pollinated by bat. Bat is a nocturnal animal who usually inactive during the daytime and active at night. So here pollination through bat is called as a chiropterophily, where chiropteron के meaning होते हैं bat. This type of pollination is mostly found in flowers who open at night. The organism who are active at night, they are called as a nocturnal organism. So here flowers are nocturnal, same as the bat. Bat is active at night. So the only source of transferring the pollen grain is bat here. So how the bat recognize the flowers are open? That these flowers are emitting a kind of odor. These flowers are emitting odor that is like a rotten fermenting fruiting smell. ये एक odor को produce करते हैं, जैसे कि एक fruiting fermentation होता है, एक सड़ी हुई जैसी smell होती है, वैसी smell को ये produce करते हैं। तो उस smell को recognize करते हुए bat वहाँ तक visit करते हैं। These are white color British flowers are produced. Flowers are again, their petals are large and stout. Petals भी इनके बड़े होते हैं और bat से अगर pollination होता है तो उस pollination को हम कहते हैं chiropterophily. For example, Adansonia, the example of chiropterophilous flower, chiropterophilous plants. Adansonia and Anthocephalus कदम भी इनको बोलते हैं। अब these are the 4 types of pollination in our syllabus, but some other examples are there, some other organism who are acted as a vector to transfer the pollen grain from stigma to from anther to stigma. सिर्फ उसको हम एनालिस्ट करेंगे, देखेंगे कि किससे हो रहा है। The another type of pollination is malacophily. Malacophily, pollination through snail. जब snail से pollination होता है, snail से pollination अगर होता है तो उस pollination को we can say malacophily. Pollination through snail is called as a malacophily. Malacophilous plants are mostly from the family, the members of family Araceae. एक फैमिली है, प्लांट फैमिली है अरासी। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो स्नेल से पॉलिनेट होते हैं और उनका जो पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं malacophily. The next type of pollination is myrmecophily. Myrmecophily, pollination through ant. Pollination through ant is called as a myrmecophily, and the myrmecophilous plants are lychee, अकाशिया। और भी इसके एग्जाम्पल है, कम से कम 2 आपने याद रखने हैं, लीची एंड अकाशिया। लास्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज ओफियोफिली. पॉलिनेशन थ्रू स्नेक. Pollination through snake is ophiophily. Ophiophily. Pollination through snake is called as a ophiophily. For example, cobra plant, snake plant. These are the plants who get pollinated by snake. So these are the pollinating agent who helps to transfer the pollen grain from anther to stigma.